बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए इंग्लिश क्लास। होप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, द ऑटोग्राफ। इसके वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसके वर्ड सेंटेंसेस करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 47 खोलें। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर बी है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपीज खोलें। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इस तरह से हेडिंग देनी है, एक्टिविटी नंबर बी। ठीक है, वर्ड सेंटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे आपने इन वर्ड्स के मीनिंग भी लिखना है, जिससे आपको अपनी कॉपी सॉफ्ट बनाना है ताकि आपके वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फेड अप। मीनिंग आपका है बोर्ड एंड अनहैप्पी। सेंटेंस लिखें, वी आर fed up by written work in class. Second है from, to bring eyebrows together to show that you are annoyed or worried. The father was torn because his son was being rude. Third word is never mind. मीनिंग है आपका डोंट वरी। अब इसका सेंटेंस लिखें, नेवर माइंड, यू विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। फोर्थ वन इज स्टे अप, डू नॉट गो टू बेड। ये आपका मीनिंग है। अब इसका सेंटेंस लिखें, आई विश माई mother allows me to stay up all night to watch the TV. Next five, here you are. The meaning is this is for you. Sentence है, here you are and I was searching you in the whole school. Six word है आपका icing. A creamy mixture that is used to cover the cake. Sentence लिखें, she was icing the cake for her birthday. Second word is autograph. A famous person's name or signature written by them for fans. इसका सेंटेंस है, I want to get an autograph of Shahid Afridi. एक वर्ड है horse on end. मीनिंग है इसका for a very long time. Sentence लिखें, they play video games for hours on end. Nine word is tackle. Try to take the ball from an opponent in the game like football. अब इसका सेंटेंस लिखें, he tackled his opponent bravely. Ten word है all the best. Words इसका मीनिंग लिखें, words used to say a goodbye, goodbye or to wish success. तो इसका सेंटेंस है, टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर 20 है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके ये वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड्स सेंटेंसेस जो आपकी एक्टिविटी नंबर बी है, ठीक है, वो
आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखनी है। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी नंबर H जो आपकी बुक्स पे दी हुई है, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 पे है, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको नीचे वहाँ पे येलो ब्लॉक में लिखा हुआ है सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपके दो वर्ड्स ऐसे हैं कि वर्ड्स तो आपको स्पेलिंग अगर आप देखो या उसको प्रोनाउंस करो आपको सेम लगेगा, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने इन दोनों जो आपके वर्ड्स हैं इनको आपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने अपनी कॉपी पे हेडिंग देनी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 द ऑटोग्राफ, एक्टिविटी नंबर H यूज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और आपने इस तरह से 3 ब्लॉक्स बनाने हैं, वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो फर्स्ट वर्ड आपका है टॉप। इसका एक मीनिंग जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है अ टॉय। तो सेंटेंस इसका लिखे अली हैज अ टॉप। सेकंड है, यही वर्ड है, इसका मीनिंग है टॉप ऑफ पेन। सेंटेंस लिखे I have lost the top of my pen. Second word is plaster. Meaning है plaster of Paris. The modest of the monument. The model of the monument was made of. ठीक है जी, तो इसके लिए the model of the monument was made of plaster. Second word is a substance made of sand, etc. The workers seal the cracks with plaster. Third one is goal. In football, he scored 3 goals in the match. अब इसी का सेकंड मीनिंग आपका है एम। तो इसका सेंटेंस लिखें, we should set a definite goal in our life. Fourth one is arms. इसका मीनिंग है limbs. His arm was broken down in a road accident. अब इसी का सेकंड मीनिंग आपका है weapons. Pakistan makes many heavy arms to defeat the enemies in the battle. Fifth word is head. इसका फर्स्ट मीनिंग है upper part. She put her head on the desk. अब इसी का सेकंड मीनिंग लिखें, chief in charge. Our school head is very polite. Sixth word is pen for writing. I bought a new pen. अब इसका सेकंड मीनिंग लिखें, place for keeping sheep. तो सेंटेंस है, many sheep were grazing grass in a wooden pen. ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर H जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप लोगों ने एक्टिविटी नंबर B और H वर्ड सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोगों ने अपनी कॉपीज में लिखे हैं, और उसके साथ साथ इनको सही अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है, याद करके इनको रफ अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला काम करेंगे।